Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Began. So students, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ class 9 physics syllabusର motion chapterରୁ କିଛି question solve କରିବା. The questions are based on the concept of average speed or average velocity, acceleration, equations of motion and also graphs of motion. So let's begin. So students, question को solve କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ first discuss କରିବା about few formulas, few concepts and then we'll go to solve questions. So first ଆମେ discuss କରିବା about the concept of average velocity. Average velocity ର formula କଣ and how to calculate it. So average velocity means what? Na the total displacement covered divided by the total time taken. तो मन रखो average velocity ର fundamental formula বা main formula कौन ना what is the total displacement covered by the object by the body divided by what is the time taken to cover that displacement. So total displacement divided by time taken is the average velocity. ठीक है जी. तो एटा होची the main formula बा the fundamental formula. किंतु आमे तेरे क्वेश्चन सॉल्व करू. क्वेश्चन सॉल्व करबा समय रे you have to look at the situation बा the condition. तो क्वेश्चन रे condition कोन देछि बा what is the situation given. Accordingly we can use different formulas. So मन रखो physics रे आमे जते बेले क्वेश्चन सॉल्व करंती कोटे पर्टिकुलर क्वांटिटी बाहर करिया पई there are many formulas available. So we must know in which problem we have to use which formula. If you can identify that, then you can solve all the questions. तो हमें कौन कहले ना average velocity ର meaning ହେଲା कौन ना एटा होची total displacement covered by the object divided by the total time taken to cover that displacement. एतरा हमें क्वेश्चन सॉल्व करिबा तो सेई टाइम रे बेले बेले कोन हेतिबो डिस्प्लेसमेंट कहि नथिबो किबा टाइम भी कहि नथिबो and we have to find the average velocity. तो से केस रे आमे देखिबा डाटा कोन देछि एंड आमे जसे फार्मूला सिखिचे से फार्मूला रो आमे कोटा यूज करबा. तो मन रखो जदी क्वेश्चन रे डिस्प्लेसमेंट कहि देछि और टाइम कहि देछि then very easily you can use this formula total displacement by the time taken you can calculate the average velocity. किंतु बेले बेले कोन हेतिबो टिके डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन देथिबो. सपोज कहिला कोन ना गोटे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए रु पॉइंट बी मूव कला v1 स्पीड रे देन पॉइंट बी रु पॉइंट सी मूव कला v2 स्पीड रे. ए रु बी रो डिस्टेंस जहा माने कर ए रु बी रो डिस्टेंस होची d तो बी रु सी रो डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम. त माने ए रु बी the distance is d and b to c distance is d and a to b there is an object move करूची the speed is but the velocity is v1 and from b to c the velocity of the body is v2. तो माने हमें यह कहि परिबा जे a ru c the total displacement is 2d d plus d कते हिजबो 2d हिजबो. तो total displacement रो first half displacement body cover करूची v1 velocity रे and the next half displacement the body is covering with a velocity v2. तब हम यह कहि परिबा जे the first half of the displacement is covered with a velocity v1 and the next half of the displacement is covered with a velocity v2. तो सही केस रे what is the formula to calculate average velocity. तो एई टाइप रे क्वेश्चन देथिबो देन हमें यूज करि परबा को फार्मूला ना v average equal to 2 v1 into v2 divided by v1 plus v2. ठीक है. So you have to remember formulas and the situation at which you have to use that formula. तो जदी हमें क्वेश्चन पढ़िबा एंड हमको लागिबो जे क्वेश्चन कोन देछि ना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करूची v1 स्पीड रे एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करूची v2 स्पीड रे. तो से केस रे एवरेज स्पीड रो फार्मूला कोन हिजबो ना 2v1 v2 by v1 plus v2. ठीक अछि. तो आ गुटे कोन फार्मूला अछि आ गुटे फार्मूला अछि सपोज गोटे बॉडी ट्रैवल करूची टाइम t. सपोज the total time of travel is equal to t. ताने गोटे बॉडी टोटल टाइम t पर्यंत से मूव करूची. तो ए जो टाइम t रो फर्स्ट हाफ टाइम माने फर्स्ट t by 2 टाइम and
the second t by 2 time माने first half time and next half time रे body रो speed अलग अलग अछि. The first half time रे body रो speed v1 अछि and in the next half time the speed of the body is v2. For example, suppose हमें कहिबा जे गोटे body start कला motion at 10 am and he finishes the motion at 2 am, sorry 2 pm. ठीक है जी. तबने दिन 10 रे गोटे बॉडी मूव करबा स्टार्ट कला एंड ठीक आफ्टरनून 2 pm रे द बॉडी कंप्लीट्स द मोशन. तो 10 रो 2टा इट इज 4 आवर्स. ठीक है जी. इट इज इक्वल टू 4 आवर्स. तो द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 4 आवर्स. एबे में कोन कहबा जे आर फर्स्ट हाफ टाइम ता माने जदि हम 4 आवर्स को दुटा हाफ करबा विल गेट 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स. तो फर्स्ट 2 आवर्स पर्यंत बॉडी मूव करथला सपोज 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे एंड नेक्स्ट 2 आवर्स बॉडी मूव कला केते स्पीड रे सपोज 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे. त माने फर्स्ट हाफ टाइम बॉडी रो स्पीड अछि v1 and the next half time the speed of the body is v2. एठे में डिस्टेंस को हाफ हाफ करनी एठे में टाइम को हाफ हाफ करी छै. तो एई टाइप रे क्वेश्चन देथिबो v एवरेज रो फार्मूला केते हिजबो ना v1 plus v2 divided by 2. ठीक अछि. त मन रखो v एवरेज रो फार्मूला 2v1 v2 by v1 plus v2 हेई पारे किबा v1 plus v2 by 2 भी हेई पारे. तो हमें देखिबा ए क्वेश्चन डाटा कोन देछि एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज दिस इज द करेक्ट फार्मूला. हमें यदि टाइम को दे हाफ करिछि तो ए केस रे हमें 2v1 v2 by v1 plus v2 अप्लाई करले आंसर भूल बारियो. सेमिति यदि डिस्टेंस को हाफ हाफ करके देथिबो देन हमें यूज करबा v1 plus v2 by 2 देन आंसर विल बी रॉन्ग. So the most important thing is knowing the formula and next record the knowing how to use or when to use which formula. जब आपको भल से जान परिबा then very easily we can solve any kind of question. तो ठीक अछि. एवरेज वेलोसिटी ऊपर ए टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे. तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करबा अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन. सॉरी ता पूर्व में डिस्कस करे अबाउट एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन ऊपर कोन कोन आसीबो क्वेश्चन. सो बंदर व्हाट इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीनिंग को ना गोटे बॉडी रो वेलोसिटी 1 सेकंड रे केते अमाउंट रे चेंज होछि. ठीक अछि. त माने द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो एक्सीलरेशन रो फार्मूला को ना चेंज इन वेलोसिटी divided by time taken. Divided by time taken. So remember that velocity is a vector quantity and acceleration is also a vector quantity. तो हम देखिबा जे गोटे बॉडी रो वेलोसिटी केते अमाउंट रे चेंज होछि और केते टाइम लागुछि. तो दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. Find the ratio. Change in velocity will be in the numerator and the time interval, but the time taken will be in the denominator. So by dividing these two quantities you can calculate acceleration. Okay. Suppose हम imagine करिबा जे गोटे बॉडी रो इनिशियल वेलोसिटी केते थिला u थिला. u is the initial velocity of the body. ठीक अछि. and the body is accelerated तले कोन हबो तारा वेलोसिटी चेंज हबो. Suppose v is the final velocity. v is the final velocity of the object. तो velocity टा u रू चेंज हे कि v हे गेला. Suppose for this change in velocity the time taken by the time interval is t. The time taken by the time interval is t. तो ए केस रे what is acceleration. So small a is the symbol for acceleration. एटा केते हिजबो एटा हिजबो change in velocity by time taken. तो change in velocity meaning का final velocity माने v minus initial velocity u divided by time taken. So a equal to v minus u by t. ठीक है जी. And remember that the SI unit of acceleration is meter per second square and the CGS unit is centimeter per second square. But most of the cases we always solve numericals or most of the time we find the answer in SI system. जदि एग्जाम रे एमसी क्वेश्चन आसीची
अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन रे ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अछि देन यू कैन आल्सो यूज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि तो देखिबा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन the question we can change the unit but usually we use the SI unit which is meter per second square okay and remember that acceleration can be positive acceleration can be negative so acceleration এটা positive ହେଇ ପାରିବ and negative ବି ହେଇ ପାରିବ ଠିକ ଅଛି so if acceleration is positive ତା ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ହଉଛି body ର velocity ଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି with time the velocity of the body is increasing ठीक ଅଛି and if a is negative ଆକୁ ଆମେ କହିବା retardation ବା deceleration ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ the velocity of the body decreases suppose ଆମେ ଗୋଟେ car ରେ move କରୁଛେ and suddenly the driver applies brakes ତବେ କଣ ହବ car ର speed କମି କମି ଯିବ so we call it retardation ବା negative acceleration and ଯଦି ଆମେ car ର speed କୁ କଣ କରୁଛେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛେ we are gradually increasing the speed of the car or speed of the body then it is said to be accelerated so mane rakho acceleration can be positive can be negative if a is positive ta mane body velocity ta bodi bodi jauchi with time and if a is negative it means the velocity is decreasing with time okay so this is all about acceleration next I am discuss kariba the most important thing which is the equations of motion because a chapter ro maximum जो numerical आसे those numericals come from this topic equations of motion आ मन रखो आमे एबे जो सब इक्वेशन लिखिबा all these equations of motion are valid only for uniform acceleration this is a very important point all these equations of motion are valid only for uniformly accelerated motion तार मीनिंग कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना जदी गोटे बॉडी रो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट रे चेंज होउची इन एवरी सेकंड ताको हमें कहबा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो फर्स्ट रिमेंबर दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन मींस द वेलोसिटी विल चेंज विथ टाइम देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मींस सिमिलर टाइम तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीनिंग कौन हबो जदी गोटे बॉडी रो वेलोसिटी each second रे equal amount रे change होउची either equal amount रे बढी बढी जाउची किबा equal amount रे कमी कमी आसुची ताको हमें कहबा uniformly accelerated बा uniformly retarded for example suppose इमेजिन करो जे टाइम 0 रे माने इनिशियली suppose the body was at rest ताने बॉडी रो स्पीड 0 थला after 1 second the speed becomes 3 meter per second. After 2 seconds, the speed becomes 6 meter per second. After 3 seconds, the speed becomes 9 meter per second. After 4 seconds, the speed becomes 12 meter per second. 5 seconds, the speed becomes 15 meter per second. Now, look at the values of time and values of velocity carefully. आमे कौन देखुछे एठी ना each second रे velocity बा speed केते बढ़ुची 3 बढ़ी बढ़ी जाउची 0 थला तापर 3 होला पुनी नेक्स्ट 1 सेकंड रे 3 रु 6 आसिला तापर 3 बढ़ला इन द नेक्स्ट 1 सेकंड 6 रु 9 आसीबो पुनी 3 बढ़िबो इन द नेक्स्ट 1 सेकंड 9 रु 12 आसीबो तापर 3 बढ़िबो ता माने कोन ना प्रत्येक सेकंड रे से बॉडी रो वेलोसिटी केते अमाउंट इंक्रीज करूची मीटर पर सेकंड अमाउंट इंक्रीज करूची तापर in each second the velocity is increasing by equal amount तो एठी हमें कहबा पाइडा होची uniformly accelerated motion and remember that in uniformly accelerated motion the acceleration a is equal to constant तो एबे में जो सब पढिबा equations of motion all these equations are applicable but are valid only for uniform acceleration जदि गोटे बॉडी रो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट रे चेंज होतबो इन एवरी सेकंड देन ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूलास किंतु जदि गोटे बॉडी रो वेलोसिटी टा डिफरेंट अमाउंट रे चेंज होतबो अन इक्वली चेंज होतबो इन एवरी सेकंड
तो से केस रे आमे यूज करि परिबा नाही दिस फॉर्मुलास एंड in this class 9th इच हमें जो जहां सब पढ़िबा all the questions will be based on uniform acceleration तो तम सिलेबस रे केवल यूनिफॉर्म acceleration ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो सो always you can use these formulas ठीक अछि तबे डिस्कस करबा व्हाट आर द formulas तो फर्स्ट फॉर्मूला कोन ना v equal to u plus at v equal to u plus at सो ए इक्वेशन रे केतरा टर्म अछि u होला गोटे टर्म u माने कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी v माने कोन v होची फाइनल वेलोसिटी a कोन a होची एक्सेलरेशन आउ t कोन t होची द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन त माने जेति टाइम पर्यंत से बॉडी एक्सेलरेट हेची ताको में t होची त माने एई फॉर्मूला आमे केतेबे यूज करबा जदी गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड हमको जଣା अछि एंड वी नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन तले t टाइम पर तार वेलोसिटी केते हबो जदी पचारिथिबो क्वेश्चन देन आमे फॉर्मूला यूज करि परिबा v इक्वल u प्लस t किबा जदी गोटे बॉडी रो u कहि देछि v कहि देछि आउ टाइम कहि देछि एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन अगेन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला a equal to v minus u by t देखो दिस फॉर्मूला v equal to u plus a এটা আসলা কোডু না फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्मूला आमे जोडी कहितले जे a equal to v minus u by t এই ফর্মুলা রু আমি এটা ডিরাইভ করি পারিবা v equal to u plus a t ओके नेक्स्ट फॉर्मूला कोन नेक्स्ट फॉर्मूला होची s equal to ut plus half at square s equal to ut plus half at square तो एटी s माने कोन s होची डिस्प्लेसमेंट u कोन u होची इनिशियल वेलोसिटी t हला टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन तो ए फॉर्मूला हमें केते बार यूज करबा देखो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करबा पई बहुत गुडे फॉर्मूला अछि बट माने रखो जदी गोटे बॉडी मूव करूची विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी त माने सदा बेले से बॉडी रो वेलोसिटी कांस्टेंट अछि जदी गोटे बॉडी रो वेलोसिटी कांस्टेंट हि जिवो त माने देयर इज नो एक्सेलरेशन if there is no acceleration there is no need to use these formulas equal to plus at so s equal to ut plus half at square these formulas should not be used in case of uniform velocity but in case of uniform motion काहे कि ना because a केते 0 होई जिवो जदी कोडे बॉडी कोडे कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करूची then there is no acceleration तो हमें a को पुट करबा 0 पुट करबा तो 0 पुट करबा जा ताको हमें यूज करबानी तो मन रखो जदी डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पचारिची हमें देखिबा जे सेटा को टाइप रो मोशन इज इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी बा यूनिफॉर्म मोशन ना इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बार बार मैं कहूँ मन रखो यूनिफॉर्म मोशन इज डिफरेंट एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज डिफरेंट इन यूनिफॉर्म मोशन कौन हुए बॉडी रो वेलोसिटी टा ऑलवेज कांस्टेंट है त माने there is no acceleration velocity is constant but in uniform acceleration velocity body body equal amount रे change होबो and in this case the acceleration a is constant b is not constant uniform acceleration रे a is constant b changes but आमे दी खाली uniform motion कहिबा तो सेही केस रे velocity is constant and the acceleration is 0 ठीक है तो जदी गोटे बॉडी मूव करूची कांस्टेंट वेलोसिटी रे जदी गोटे बॉडी मूव करूची कांस्टेंट वेलोसिटी v रे कांस्टेंट वेलोसिटी v रे आ पचराई छी जे 10 सेकंड रे बा 5 सेकंड रे बा 7 सेकंड रे से बॉडी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिवो तो से केस रे डिस्प्लेसमेंट s रो फॉर्मूला कोन हिजबो वेलोसिटी टाइम t v * t हिजबो ठीक है जहां भी कहते वेलोसिटी ताको मल्टीप्लाई कर द टाइम रे यू कैन गेट द डिस्प्लेसमेंट केते बेले जदी बॉडी मूव करूची कोने कांस्टेंट वेलोसिटी बट जदी बॉडी मूव करूची विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो सही केस रे हमें यूज करबा द सेकंड फार्मूला s equal to ut plus half at square what is u होची इनिशियल वेलोसिटी t ला टाइम a होची एक्सेलरेशन and s is the displacement okay the third formula is v square minus u square is equal to 2as v square minus u square equal to 2as तो এই फॉर्मूला मीनिंग कोन जदी
गोटे बॉडी रो इनिशियल वेलोसिटी u थिबो एंड नाउ द बॉडी इज एक्सीलरेटेड ताले s डिस्प्लेसमेंट कवर कला परे से बॉडी रो वेलोसिटी केते हिथिबो अगेन मैं कहि दउची v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as ए फार्मूला आमे केते बेले यूज करबा ना जदी गोटे बॉडी रो इनिशियल वेलोसिटी हमको जଣା अछि एंड वी नो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ताले पचारि थिबो जे 10 मीटर कवर कला परे बा 15 मीटर कवर कला परे से बॉडी रो वेलोसिटी केते हबो बा वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी आफ्टर कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट s द ए टाइप रो क्वेश्चन पचारि थिबो तो से केस हम यूज करबा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s सो जे मैं कहली जे रिमेंबरिंग द फार्मूलाज इज इंपोर्टेंट बट तार आहुरी कोन अधिक इंपोर्टेंट ना हमें जानवा दरकार जे को क्वेश्चन हमें को फार्मूला यूज करबा दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तो ए तीनटा फार्मूला एनसीईआरटी बुक रे देछि बट आ छडा आ गुटे फार्मूला अछि तक हम कहि दोछि दैट इज बोनस फार्मूला से फार्मूला का राउछि द डिस्प्लेसमेंट covered in nth second displacement covered in nth second आर फार्मूला को ते फर्स्ट बुझिबा जे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड रो मीनिंग को तो गुड एग्जांपल दोछि सपोज मु कहब कोन ना गोटे सपोज एरा होछि टाइम एक्सिस ड्रा कर दबा एरा होछि 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ठीक है सपोज गोटे बॉडी मूव करी आरंभ कला तो 0 रु 1 सेकेंड भितरे बॉडी कवर कला 10 मीटर देन 1 रु 2 सेकेंड भितरे बॉडी कवर कला 7 मीटर देन 2 रु 3 भितरे बॉडी कवर कला 9 मीटर एंड 3 रु 4 भितरे बॉडी कवर कला 12 मीटर ठीक है एबे मैं क्वेश्चन पचारिबी जे 4 सेकेंड रे बॉडी केते डिस्टेंस केते डिस्प्लेसमेंट कवर करछि इन 4 सेकेंड्स माने स्टार्टिंग फ्रॉम 0 4 सेकेंड रे 4 सेकेंड रे बॉडी केते डिस्प्लेसमेंट कवर कला आंसर कोन हबो डिस्प्लेसमेंट in 4 seconds displacement in 4 seconds तो आर आंसर कोन हबो सब ऐड कर दबा 10 plus 7 plus 9 plus 12 10 plus 7 plus 9 plus 12 तरा कते हिबो 10 plus 7 like 17 17 plus 9 like 26 then 26 plus 12 कते बा 38 तो 4 सेकंड रे बॉडी 38 मीटर कवर करछि बा क्रॉस करछि बट जदी एबे हम पचारिबा जे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड रे बॉडी केते डिस्प्लेसमेंट कवर करिछि 4th सेकेंड नॉट 4 सेकेंड्स 4th सेकेंड रे बॉडी केते डिस्प्लेसमेंट कवर कला तो सही केस रे आंसर कोन हबो देखो 0 रु 1 एटा हो फर्स्ट सेकेंड 1 रु 2 एटा हो सेकेंड 2 रु 3 एटा हो थर्ड सेकेंड एंड 3 टू 4 एटा हो फोर्थ सेकेंड ठीक है तो 4th सेकेंड रे बॉडी कवर करछि 12 मीटर तो आंसर कोन आंसर है 12 मीटर है तो देखो एठी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड्स द आंसर इज 38 मीटर हमें पूरा 0 आरंभ करछि बट जदि पचरा जे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड हम कोन देखिबा 3 रु 4 ठीक है 3 टू 4 सेकेंड अछि से 4th सेकेंड इंटरवल रे केते से कवर करछि डिस्प्लेसमेंट द आंसर इज 12 तो से केस रे हमें कोन फार्मूला यूज करबा s nth त माने nth सेकेंड रे केते डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करछि तर फार्मूला कोन आसीबो u plus a/2 whole into 2a minus 1 अगेन u कोन u होछि इनिशियल वेलोसिटी a हला एक्सीलरेशन n कोन जो सेकेंड पचार थिबो यदि पचार थी 4th सेकेंड हमें n को 4 पके देबा यदि पचार थिबो 5th सेकेंड हमें n को 5 पकेबा यदि पचार थिबो 3rd सेकेंड हमें n को 3 पकेबा तो जो सेकेंड पचार थिबो वी पुट द करेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ n ठीक है तो ए फार्मूलाटा एनसीईआरटी भरे देनी बट समटाइम्स यू मे गेट क्वेश्चन यूजिंग दिस फार्मूला और फ्रॉम दिस फार्मूला बेस्ड ऑन दिस फार्मूला ठीक है
So these are the formulas of equations of motion. And now, after learning all these formulas, how to solve questions based on these concepts. And I have selected 10 questions from different concepts, from different formulas, and I'll solve all the questions one by one. So let's begin. Let's solve the first question. Question कौन दीजिए ना, a 150-meter long train is moving with a uniform velocity 45 km per hour. The velocity of the train is constant. Uniform velocity meaning को say train रा velocity constant अछि. The time taken by the train to cross the bridge of length 850 meters is dash. And you have four options. And देखो ये option देइछि in terms of second. ठीक अछि. But speed देइछि in terms of kilometer per hour. So ये कौन करिबा? We have to convert the speed from kilometer per hour to meter per second. The rule कौन कहउछि ना 45 kilometer per hour दैट convert करिबा meter per second को we have to multiply 5 by 18. तो कहते हैं 45 into 5 by 18 meter per second. आपको 9 रे काटले हबो 2, आपको 9 रे काटले हबो 5, so 5 into 5 ହେଲା कहते हैं 25 by 2 by टा हेजिबो 12.5 meter per second. ओके, ता माने ट्रेन रो वेलोसिटी केते कहला 12.5 meter per second. And ट्रेन केते लेंथ 150 meter. ठीक अछि. And जो ब्रिज अछि से ब्रिज रो लेंथ केते 850 मीटर. देखो सपोज एटा होची ब्रिज, दिस इज द ब्रिज एंड दिस इज द ट्रेन. ओके, दा होची ट्रेन. ट्रेन रो लेंथ केते कहला 150 मीटर एंड ब्रिज रो लेंथ केते कहला 850 मीटर. 850 मीटर. ओके, तो से पचाला जे जदी ट्रेन रो स्पीड होची 12.5 मीटर पर सेकंड ताहले केते टाइम रे ट्रेन ता ब्रिज को क्रॉस करिवो. तो ट्रेन टा ब्रिज को क्रॉस करे मीनिंग को एबे देखो सपोज एडा होची ट्रेन इंजन, दिस इज द फ्रंट माने द इंजन ऑफ द ट्रेन जोटी पायलट बसिछि. तो एबे कोन हबो जते बेले हम केते बेले कहिबा जे ट्रेन टा ब्रिज क्रॉस करला बोली जते बेले ट्रेन रो लास्ट बगी ब्रिज क्रॉस करि जिवो. ता माने जते बेले ट्रेन टा से एमदी पहुंचिबो द लास्ट बगी ऑफ द ट्रेन जते बेले ब्रिज को क्रॉस करि गला then आमे कहि परिबा जे the train has crossed the bridge. तो सही कैसे देखो ना, look at the engine position. जते बेले इंजन टा जस्ट ब्रिज रे एंट्री करूची एठी अछि त माने इंजन ए पॉइंट रे अछि. जते बेले ट्रेन टा कंप्लीटली क्रॉस करि जिवो ब्रिज को इंजन कोडी पहुंचिबो, इंजन आसी कि देखो आसी ए थि इंजन पॉइंट बी रे थिबो. ठीक अछि. तबे ए रु बी रो डिस्टेंस केते हे जिवो ना लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. इट हाउ 150 मीटर आउ ब्रिज रो केते लेंथ 850 मीटर. तो एटा हे जिवो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन व्हेन इट कंप्लीटली क्रॉसेस द ब्रिज. तो एटा केते एटा हे जिवो 850 प्लस 150 एटा हे जिवो 1000 मीटर. ठीक अछि, केते हे जिवो 1000 मीटर हे जिवो. तो 1000 मीटर ला डिस्टेंस आउ केतला स्पीड होची 12.5 मीटर पर सेकंड. तो आमे आंसर बाहर करिबा जे केते टाइम लागिबो. तो 1000 डिवाइडेड बाय आमे 12.5 कर देबा. तो एटा आमे डिवाइड करबा आंसर आसीबो 80 सेकंड. ता चेक कर देबो यूजिंग द जे डिवाइड करो कि कैलकुलेट हिसाब करो आराम से पाइ जिवो. तो आंसर विल बी 80 सेकंड. तने 80 सेकंड लागिबो ट्रेन को से ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करबा पे. So option C is the correct answer. Okay, so now we'll go to the next question. Next question kon dechi. A man walks on a straight road from his home to the market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. ठीक है जी. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. ठीक है. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to dash. देखो बेरे बेरे कौन बे क्वेश्चन रे एमती डाटा दे थाए which are unnecessary but not required. ता माने कौन देखो से कहला क्वेश्चन एठी जे एटा होची होम
ठीक है, एंड दिस इज द मार्केट, ठीक है। एंड जो रोड लगी, द रोड कनेक्टिंग द होम टू द मार्केट इज अ स्ट्रेट रोड, देखा जी स्ट्रेट रोड अच्छी। ଏବେ କଣ ହେଲା, a man walks from his home and he goes to the market, ତ ମାର୍କେଟ ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା 2.5 କିଲୋମିଟର, the market is situated at a distance of 2.5 kilometer from the home, तबे कौन ला, the person or the man goes from his home to the market in a straight road, ठीक है, एंड केते स्पीड गला 5 किलोमीटर पर स्पीड गला, ठीक है, 5 किलोमीटर पर स्पीड गला, बट से कौन देखला जे मार्केट बंद अछि बा मार्केट क्लोज अछि, तो से कौन करिवो, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक, जते बेले कौन से देखला जे मार्केट बंद अछि बा क्लोज अछि, एबे से कौन करिवो, से टर्न बैक करिवो, अगेन कौन से मार्केट टू पुणी बैक करिवो टू द होम। अच्छा, जदि होम रो मार्केट रा डिस्टेंस होची 2.5 किलोमीटर, तो दैट मैन goes 2.5 kilometer with a speed of 5 kilometer per hour, and then he saw that the market is closed, तबे कौन होगा, he will turn back, now he return from market to home, तो market to home रो केते डिस्टेंस से सेम होगा 2.5 किलोमीटर, किंतु तो से रिटर्न करूची जे कम बैक करूची, तार स्पीड केते होची 7.5 किलोमीटर पर आवर, तमे को अधिक स्पीड रे मूव करूची, सो रिटर्न जर्नी पाई केतला स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो से पचारला जे व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट, देखो 0 to 40 मिनट जो माने वैल्यू देछि एटा किसी दरकार नाही, ठीक है, देखो कहली बेले बेले कोन हुए, बेले बेले क्वेश्चन रे किसी डाटा देथाय व्हिच आर नॉट नीडेड और नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, सो से डाटा देखे में कंफ्यूज हुआ नाही, हमको पचे एवरेज स्पीड पचारछि, तो एवरेज स्पीड रो फार्मूला मु कोन कहितली, कोटे होउची टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सेटा हे पारे सॉरी एवरेज स्पीड माने द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, किंबा जदी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस गोटे बॉडी ट्रैवल करूची v1 स्पीड रे एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करूची v2 स्पीड रे, तो से केस हम यूज करि परिबा 2v1 v2 बाय v1 plus v2, और जदी टाइम को हाफ कर देछि माने फर्स्ट हाफ टाइम मूव करूची v1 स्पीड रे एंड नेक्स्ट हाफ टाइम मूव करूची v2 स्पीड रे, तो से केस हम यूज करि परिबा v1 plus v2 by 2, तो एठी भी देखिबा एठी कोन हाफ कराइछि, डिस्टेंस को हाफ कराइछि ना टाइम को हाफ कराइछि, द आंसर इज डिस्टेंस को हाफ कराइछि। एबे देखो दैट मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, घरु जीवो मार्केट को केते 2.5 किलोमीटर, अगेन मार्केट फिरबो घरु केते 2.5 किलोमीटर, तो केते डिस्टेंस 5 किलोमीटर ला, जीवो 2.5 पुनी फेरिबो 2.5, द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, तो माने से 5 किलोमीटर जो फर्स्ट हाफ 2.5 किलोमीटर से गला केते स्पीड रे ना 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड गला, ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी केते तर स्पीड अछि 7.5 किलोमीटर पर आवर, ताको लिखे देबा v1 आको लिखे देबा v2, ठीक अछि, तो v1 v2 पाई गेले, आ कोन डिस्टेंस हाफ हाफ कराई छि, तो ए केस रे v एवरेज केते हिजबो, v एवरेज हिजबो 2v1 v2 by v1 plus v2, जेंतु बार बार कहितली जे फार्मूला जानला परे हमें जे क्वेश्चन पढिबा, क्वेश्चन को पढ़ला परे हमें ताको भलसे एनालाइज करिबा, एंड आफ्टर एनालिसिस हमको देखैले पड़िबो जे हमें को फार्मूला यूज करिबा, बिकॉज़ फॉर एवरी केस वी हैव ए डिफरेंट फार्मूला, तो कोन लिखिबा एटा 2 into 5 into 7.5 divided by 5 plus 7.5, तो 2 into 7.5 एटा 15 हे जबो, तो 15 into 5 केता हो 75 divided by that's it, that is 5 plus 7.5 नेटा हे जबो 12.5, ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय 12.5, तो आकमे डिवाइड करले आंसर केते आसीबो, बाय 12.5 करले the answer will be I think 6 kilometer per hour हे जबो, ठीक है, the answer will be 6 kilometer per hour, बट एथिरे ऑप्शन रे 6 किलोमीटर पर आवर कोड नाही,
ठीक है ट्राई कर दबा आई थिंक यूजिंग कैलकुलेटर हम देखिबा आंसर केते बाहरची सो आमे बे डिवाइड करिबा 75 को 12.5 पे 75 डिवाइडेड बाय 12.5 इट इज 6 ले तो 6 बाहरची सो एथरे देखो आंसर मैच करूनी आंसर टा एथरे 25/4 जो देजी एठी सो 25/4 होची कटा होची अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.25 आसीबो 6.25 किलोमीटर पर आवर बट आंसर टा हमर 6 बाहरुची आई थिंक एथरे आंसर टा रॉन्ग होची आमे जो मेथड कले द मेथड इज करेक्ट एंड in this case the answer is wrong ठीक है ऑप्शन रे एक्चुअल आंसर नहीं but we have done the right procedure but the right method okay बेले बेले कौन भी माने क्वेश्चन रे भी एमती किछि ऑप्शन भूल थाए सो डोंट वरी अबाउट इट कोन जदी हमर प्रोसेस ठीक अछि ଆମେ ଯଦି ठीक फॉर्मूला यूज करिचे देन now look at next question कोन दिछि ना ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट जेतेबे कहितब जे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तने आखि बंद के लिखि देबो u इक्वल 0 हला द इनिशियल स्पीड के 0 हो what is the ratio of the distance traveled by the body during fourth and third second इसको पचला गोटे बॉडी इनिशियली थिला रेस्ट थिला माने 0 थिला हमें बाहर करबा the ratio of distance traveled by the body during fourth second and third second तदा बाहर करियो s fourth divided by s third ठीक है हमको ए वैल्यू बाहर करे अछि तो हम एठी को फॉर्मूला यूज करिबा मुझे कहथि s nth कोन u plus a/2 whole into 2n minus 1 ठीक है ओके तो जेतु u 0 अछि एठी एबे कोन आइजबो u 0 अछि तेरा कते जबो a/2 into 2n minus 1 हे जबो तो से पचा दिछि जे फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड रे से केते डिस्टेंस ट्रैवल करबो हमें रेशियो बाहर करबा तब s फोर्थ बाहर करबा तो कोन करबे एडी ना लिखबा a/2 into 2 into n केते n को 4 पकेबा बिकॉज़ रे फोर्थ पार करछे तो 2 into 4 minus 1 तेरा कते रह जो 8 minus 1 7 तेरा जो 7 a/2 हेला सिम s थर्ड केते हबो ना a/2 into 2 into 3 minus 1 6 minus 1 के 5 हे जो रह जो 5a/2 तबे में कोन करियो एबे में भाग करियो s फोर्थ पे s थर्ड सो s फोर्थ by s थर्ड एटा कते हे जो s फोर्थ होची 7a/2 s थर्ड होची 5a/2 तो 2 to cancel हे जो a cancel the answer is 7/5 so in this way you can solve this question now let's go to the next one question kon dechi a body with a initial velocity of 5 meter per second accelerates at 2 meter per second square then its velocity after 10 seconds is dash तो कोन कहि दी छी ना u कते कला u कहिला 5 meter per second ठीक है कोन कहि छी दा इनिशियल वेलोसिटी कते कला 5 meter per second तो हम लिख देबा इंडिया कते u छी 5 meter per second accelerates at 2 meter per second square त माने the acceleration a is equal to 2 meter per second square कहला तो से कोन पचला ना what is its velocity after 10 seconds 10 सेकंड पर तार वेलोसिटी कते हो जदी हम u जणा अछि a जणा अछि और टाइम जणा अछि हमको v बाहर करबर अछि फॉर्मूला कोन बहुत इजी फॉर्मूला v plus it the first formula okay u करे u होची 5 plus a कते a होची 2 and time कते 10 देची that is what 20 la 5 the answer is 25 meter per second so option b is the correct one ठीक है जी तो ए भली हमें क्वेश्चन पढिबा and then हमें डिसाइड करिबा जे which formula should be used now look at this question a graph based question देची the question is the figure shows the displacement versus time graph of a particle moving along the x-axis. Which of the following statement will describe the motion of the particle correctly? तो along y-axis आमे नैचे position नैचे बा आमे कहि परिबा we have taken the displacement
and along y axis sorry along x axis আমি নেইছে টাইম নেইছে ঠিক আছে গ্রাফ এমতি দিছে तो आमे ग्राफ को स्टडी करिबा एंड आमे कहिबा जे व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल तो ऑप्शन कोन अछि द पार्टिकल इज मूविंग कंटिन्यूअसली द पार्टिकल इज एट रेस्ट the velocity of the particle increases up to the time t1 and then becomes constant the particle moves with a constant velocity of to time t1 and then stops okay तो এটা কো গ্রাফ দিয়েছে এটা দিয়েছি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ দিয়েছি আমি জানিছে যে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ রে দেখো যদি গোটে বডি থিবো রেস্ট রে যদি গোটে বডি রেস্ট ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତାର x t ଗ୍ରାଫ ରଖୁଛେ ମାନେ पोजिशन टाइम ग्राफ बा आमे कहि परिबा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रखुछे तो ग्राफ केमति आसीबो द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस जदी बॉडी रेस्ट अछि हैला जदी आमे देखिबा जे x t ग्राफ टा गोटे स्ट्रेट लाइन आसुचे लाइक दिस आर मीनिंग को आर मीनिंग होची कांस्टेंट वेलोसिटी बा यूनिफॉर्म मोशन ठीक अछि तो एबे ग्राफ देखो टाइम 0 रु t1 पर्यंत कोन होची ग्राफ टा एमती बढ़ी बढ़ी गला आमे गोटे पाउचे स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्रीजिंग ता माने आमे या कहि परिबा जे कोन ना 0 रु t1 पर्यंत कोन होची बॉडी मूव करूची गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी रे ठीक अछि एंड t1 टाइम पर कोन होची देखो द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस तो एबे आमे कोन कहिबा जे बॉडी रो वेलोसिटी 0 होई जिवो बा बॉडी हे जिवो एट रेस्ट ठीक अछि जते बळे x t ग्राफ हे जिवो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ता माने से बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट आउ किछि चेंज हो ने फिक्स हे गला बा बॉडी मूव करूनी जदी बॉडी मूव करूनी ता माने कोन द बॉडी इज एट रेस्ट तो आंसर कोन हो ए क्वेश्चन रो द पार्ट ऑप्शन डी हो द पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू द टाइम t1 and then it stops and that's why the displacement is not changing okay the option B next question देखो कौन is next question ना a body moving in a straight line with an initial velocity u and a constant acceleration a covers a distance of 40 meter in 4th second and a distance of 60 meter in 6th second then हमें बाहर करिबा the values of u and a माने what is the initial velocity and what is the acceleration we have to find this value ओके तो सी कौन कहला ना 4th सेकंड रे बॉडी कवर करछु 40 मीटर डिस्टेंस एंड 6th सेकंड रे बॉडी कवर करछु 60 मीटर डिस्टेंस तो 4th 6th ए जदी इन द वर्ड आसिला हमें यूज करे को फॉर्मूला s n f यूज करबा द फॉर्मूला इज u plus a by 2 whole into 2n minus 1 ओके तो हमको जाना नहीं जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a we have to find it so now we are going to find the values of u and a केमति बाहर करिबा by solving this question okay तो देखो 4th सेकंड रे बॉडी कवर करूची 40 मीटर तबे कोन करिबा m को पकेबा 4 पकेबा s कतो 40 मीटर काहे कि द क्वेश्चन रे कोन देछि ना 4th सेकंड रे बॉडी कवर करूची 40 मीटर तबे मु कोन लिखिबेडी s को लिखिबी 40 u तो u रहिला हमें जानने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस a by 2 होल इनटू 2n माने 2 into 4 हिजबो -1 बिकॉज़ 4th सेकंड हिज तो एटा हिजबो 7 हिजबो तो हमें कोन पाइले एठी ना u plus 7a by 2 देखो 7 into a by 2 ठीक है इक्वल टू 40 पाइले ओके आपको मैं लिख दो इक्वेशन नंबर 1 तापर देखो 6th सेकंड रे बॉडी कवर करूची 60 मीटर एबे हम कोन करबा अगेन ए जो फॉर्मूला रे हमें s को लिखिबा 60 और n को केते पकेबा n को पकेबा 6 पके देबा तो u plus 2 into a by 2 whole into 2 into 6 minus 1 ओके तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 12 minus 7 11 हिजबो तो हमें केते पकेबा u plus 11a by 2 equal to 60 एटा हो इक्वेशन नंबर 2 ओके तो इक्वेशन 2 पाइला परे आपको मैं सॉल्व करके हमें u और a पाई परिबा हाउ
देखो u plus 11a/2 is equal to 60, u plus 7a/2 equal to 60. Okay. तो एबे मैं कौन करिबा, लेट अस सबट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन. सॉरी एटा 40 बोथ, हां ता 40 अछि, सॉरी ता 40 अछि. ओके, लेट अस सबट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो अदर हमें सबट्रैक्ट करिबा. एबे कोन हे जिवो, u कटि गेला. देखो ये अछि प्लस u, ये हमें माइनस करिचे तो कोन कटि जिवो. 11a/2 एटा हबो माइनस 7a/2. 11a/2 माइनस 7a/2 इक्वल टू 60 माइनस 40 केते हिजो 20 हिजो. तो 11a/2 माइनस 7a/2 एटा हिजो 4a/2 इक्वल केतला 20 हैला. दा ऊपर 2 हिजो कटे की. तो 2a हमें 20 पाइले. तो a केते हिजो, a हिजो 20/2 बा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So we got that the acceleration केतेला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तबे देखिबा जे ए जो चारटा ऑप्शन देछि, चारटा ऑप्शन रो को ऑप्शन रे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 10. देखो एठी गोटे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अछि, एठी भी 10 अछि. एथरे 5 दी जे 5 दी तो एटा हबनी, अब काट दबा. त माने बी आउ डी भी गोटे आंसर बाहरिबो. देन आमे चेक करिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू. तो आमे तेबे a को 10 पाई गले. एबे कोन करिबा, ए वैल्यू को आमे पुट कर दबा इन एनी इक्वेशन. देखो एटी आमे कोन पाइचे ना u प्लस, लुक एट दिस इक्वेशन, u प्लस 7a/2 इक्वल में केते 40 पाइचे. और में a केते पाइले, a को में 10 पाइले. त हम लिखि परबे एठी जे u प्लस 7 into 10 divided by 2 equal to 40 implies u plus देखते एटा हे जिवो 35. u plus 35 equal to 40 बा u केते हे जिवो, u हे जिवो 40 minus 35 बा 5 मीटर पर सेकंड. तो ऑप्शन डी आंसर. u हला 5 मीटर पर सेकंड और a केते ए होची 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक अछि. तो ए भाबे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइबा. सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को देछि ना, ए रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square. The distance covered by the car in 10 seconds after the start is guess. तमने जरे से कार स्टार्ट करूची, तमे कोन माने स्टार्ट जरे करिवो, u तो 0 थिबो, हमें u को 0 पके देबा. ठीक अछि. a केते a कहला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आ कोन पचला जे 10 सेकंड रे से केते डिस्टेंस कवर करिवो. ठीक है 10 कहला. तमे को कोन यूज करिबा, a is equal to ut plus half t square. जेतु u देछि, a देछि, t देछि, आ हमको बाहर करबे छै s बाहर करबे छै. हम यूज करबा a is equal to ut plus half a t square. u केते 0, तो 0 into t एटा 0 हो जिवो. तर half a t square, a केते 4 कहला, t केते 10, हम 10 रो स्क्वायर करबा. ठीक है, सेटा कटि के 2 हो जिवो. तो 2 into 100, 10 रो स्क्वायर 100 केते हो जिवो 200 हो जिवो. 200 मीटर. तमन ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in just 10 seconds after the start. Again, start means you have to. तो सिको कहला ना स्कूटर टा स्टार्ट कला and then after 10 seconds it acquires a velocity of 36 km per hour. तो v केते कहला, v कहला 36 km per hour. आपको मैं कन्वर्ट करबा मीटर पर सेकंड रे केते हो 36 into 5/18. तो एटा कटि के 2 हे गेला. तो 2 into 5 केते 10 हे जिवो. ठीक अछि. तो v केते, v होची 10 मीटर पर सेकंड एंड केते टाइम लागला, द टाइम टेकन इज 10 seconds. And you have to find acceleration. तो एरो फॉर्मूला कोन v minus u by t. बहुत इजी क्वेश्चन है एटा. v को हम पकेबा 10 पकेबा माइनस u केते इला 0 by t. ठीक है 10. तो 10 by 10 केते जिवो 1 हिजबो. सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, सो ई टाइप ऑफ क्वेश्चन ना बहुत इजी अछि. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोन इज क्वेश्चन दा, a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying the brakes. If the retardation due to the brakes is 2 meter per second square, then the initial velocity was gas. देखो हम जेन कहले जदि में गोटे
गोटे vehicle move करूची से ट्रेन हो कि कार हो कि बाइक हो जहाँ भी हो से move करूची and then if you apply brake ताले कौन हबो the velocity will gradually decrease and it is known as retardation. तो ये क्वेश्चन देछि कौन कहला ना गोटे ट्रेन मूव करथला राइट with some velocity and by applying brake आमे कौन कले ताकू 20 सेकंड रे रेस्ट को नि आसीबे जेहेतु आमे गोटे बॉडी को रेस्ट को आनिले ता माने v0 हो जिवो जदि गोटे बॉडी स्टार्ट करिवो रेस्ट टू ता माने u0 जदि गोटे बॉडी को लिखा जे ए बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट ता माने v0 हो ताले से ऑलरेडी मूव करथला गोटे स्पीड रे आमे ब्रेक अप्लाई कले तार स्पीड कमी कमी गला एंड फाइनली v0 हो गला ठीक अछि तो v केते 0 तो केते टाइम लागला टाइम होची 20 सेकंड्स एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ मन रखो रिटार्डेशन माने पुट द नेगेटिव साइन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन अब देखिए ए केते ए होची -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पचारची जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u हमें u बाहर करबा अगेन से सेम फार्मूला हमें अप्लाई करिया v = u + at v केते 0 = u + at a केते a होची -2 * t ठीक है t होची 20 तो अबे देखो अब एटा -40 हे जबो तो u केते u हे जबो +40 मीटर पर सेकंड तब ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन okay so in this way you can solve this question so now let's come to the last question तो हमें already 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए छे and this is the last question the 10th one so let's do question is a body starts from rest देखो starts from rest लिखला माने हमें u को 0 लिख देबा clear and moves with a uniform acceleration of 10 meter per second square in the first 10 second प्रथम 10 सेकंड जाए से मूव करिवो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ए केते कहला ए कहला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ केते कहला टाइम होची 10 सेकंड्स तो जेते बॉडी स्टार्ट करची रेस्ट रू प्रथम 10 सेकंड से मूव करची विथ एक्सेलरेशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकंड्स it moves with a uniform velocity then the total distance covered by it is dash देखो एटा बढ़िया क्वेश्चन सी कोन कहला ना सपोज से जो बॉडी टा स्टार्ट कला ठीक 9 am रे हैला तो 9 कोन 9 am रे सी कोन रेस्ट हला इट स्टार्ट्स मूविंग तो प्रथम 10 सेकंड्स ताने 9 आवर 0 मिनिट 10 सेकंड पर्यंत से मूव करिवो विथ एक्सेलरेशन केता एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु नेक्स्ट 10 सेकंड्स ताने 9 आवर्स 0 मिनिट 20 सेकंड नेक्स्ट 10 सेकंड पर्यंत से मूव करिवो विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ताले आमे बाहर करिबा से टोटल केते डिस्टेंस कवर करिवो तबे को फास्ट बाहर करिबा जे प्रथम 10 सेकंड रे से केते पाथ कवर करिवो जेहेतु कोन फास्ट 10 सेकंड से मूव करू विथ एक्सेलरेशन हमें यूज करिबा ut + हाफ at स्क्वायर अपन लिख दो s1 त माने प्रथम 10 सेकंड रे केते हला डिस्प्लेसमेंट केतला डिस्टेंस u तो 0 कहि देछि ut 0 होई जिवो प्लस हाफ a केते a होछि 10 t रो स्क्वायर t केते d भी 10 तो 10 रो स्क्वायर कतो एडी 5 हे जिवो तो केतला 5 * 100 माने 500 मीटर तबने प्रथम 10 सेकंड रे से बॉडीटा 500 मीटर कवर कला ओके देन नेक्स्ट 10 सेकंड से मूव करिवो गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट से वेलोसिटी रो वैल्यू केते हमें जानिबे केमती देखो हमें जो कहले बॉडी स्टार्ट कला रेस्ट हमें ड्रॉ करिबा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक अछि तो टाइम 0 रे स्पीड 0 थला एबे कोन हबो द बॉडी इज एक्सेलरेटेड तले माने कोन हबो बॉडी रो स्पीड बढ़ी जिवो हमें जानि जे जदी गोटे बॉडी मूव करिछ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तर vt ग्राफ केमते हबो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस
देखो तार स्पीड बढ़ी गला तो प्रथम 10 सेकेंड जाए तार स्पीड बढ़ी जीवो ओके तापर कौन हम नेक्स्ट 10 सेकेंड माने 10 रु 20 जो नेक्स्ट आसला 10 सेकेंड से बॉडी रो स्पीड कौन हम आउ बढ़िबनी कांस्टेंट हे जीवो ठीक है हमको बाहर करिवार अछि जे फास्ट 10 सेकेंड पर से बॉडी रो स्पीड केते हैला तो ता पे में कौन करिबा आमे यूज करिबा v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला ता माने प्रथम देखो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो प्रथम 10 सेकेंड पर तार स्पीड केते हो काहे कि ना फास्ट 10 सेकेंड जाए तार स्पीड बढ़ी गला एंड तापर कोन होची स्पीड कांस्टेंट हे जिवो तो एठे देखिबा v केते u प्लस at u तो 0 थला a केते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t केते du 10 एटा 100 मीटर पर सेकंड ता माने प्रथम 10 सेकेंड पर से बॉडी रो स्पीड केते हे जिवो 100 मीटर पर सेकंड हे जिवो तले एबे कोन हो नेक्स्ट 10 सेकेंड पई बॉडीटा एतिकी स्पीड मूव करबो गोटे कांस्टेंट स्पीड मूव करबो तम हमें देखो ए जो ग्राफ टा ड्रा करथले ए ग्राफ रे दिस वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड तो एबे कोन हो बॉडीटा से 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड मूव करबो फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड तो एबे केते हो डिस्टेंस कवर जदी गोटे बॉडी मूव करूची 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे फॉर 10 सेकेंड्स केते हो डिस्टेंस ना स्पीड इनटू टाइम त माने 100 मीटर पर सेकेंड इनटू 10 सेकेंड ता हे जीवो 1000 मीटर हे जीवो केते जीवो 1000 मीटर हे जीवो ता माने प्रथम 10 सेकेंड रे जे बॉडी कोन मूव करूची एक्सेलरेशन से कवर कला केते 500 मीटर कवर कला and in the next 10 seconds by traveling with a constant velocity the body covers 1000 meter तो टोटल केते हो मिसे देबा 1000 प्लस 500 केते जो 1500 हे जीवो ताले बे देखो आंसर कोठा हो ऑप्शन बी हिज आंसर 1500 मीटर था आई थिंक इधर ऑप्शन सी और डी इतने कटि जाईची एनीवे हमर तो आंसर बी बाहरी गला ओके तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन तो बेले बेले कोई आमे जे क्वेश्चन सॉल्व करू जे यदि हमें तार ग्राफ ड्रा कर देबा बा डायग्राम ड्रा कर देबा इट बिकम्स इजियर ओके सो जो माने डिफिकल्टी फेस करूचो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई से मोर टिप्स ला कोन द फर्स्ट each term रो मीनिंग बुझे को ट्राई करो what is the meaning of uniform motion what is the meaning of acceleration what is the meaning of distance displacement speed velocity then try to remember different formulas so you have to remember the formula and then you have to understand जे हमें को केस रे को फॉर्मूला यूज करिबा for different kind of questions for different cases we have different formulas so if you can do these things then हमें आराम से any question solve कर पाएगा again हमें क्वेश्चन पढुचे you have to try to analyze the question understanding the question is very important अब जेमति कहली while solving few questions if you draw the diagram maybe graph हे पारे किंबा गोटे any other diagram हे पारे जिन हम जो ब्रिज क्वेश्चन कले जो ट्रेन दा ब्रिज क्रॉस कला तो से के समिति डायग्राम ड्रा कर देबा कोन जाना पड़ी जिवो जे जे ट्रेन दा ब्रिज को क्रॉस करूची ताले केते से डिस्टेंस ट्रैवल करी सो डायग्राम भी कोन बहुत इंपोर्टेंट है तो प्रॉब्लम सॉल्व करे पई डायग्राम इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट सो हम देखे पड़िबो जे हम केमिति बहुत क्वेश्चन सॉल्व करिबा एंड देखो जो माने डेली किछि क्वेश्चन सॉल्व करथबो हमें फॉर्मूला को डेली नीचे घुसतिले किछि लाभ नाही बट हमें जते अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिबा ताको यूज करिबा देन हमर कांसेप्ट आरो क्लियर हबो एंड गोटे आईडिया आसी जिवो जे नेक्स्ट टाइम यदि एमदा प्रॉब्लम आसे तो हमें ताको को प्रोसेस रे ताको सॉल्व करिबा सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो आई ऑलवेज से दैट जो ने प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई डिफिकल्टी फेस करूचो प्रैक्टिस करो माने डेली फॉर्मूला पढो और फॉर्मूला को यूज करबा सिखो ओके एंड ट्राई टू एनालाइज क्वेश्चन डाटा कौन देछि कौन पचारुछि एंड व्हिच फॉर्मूला should be used and try to solve as many questions as possible so in this way you can improve yourself in solving numericals okay तो ठीक है स्टूडेंट्स आज मैं इतने स्टॉप करिबा आई थिंक हमें जति क्वेश्चन सॉल्व कले every solution
is understood by you. It is clear. Still, if you have any kind of doubt, then you can ask me in the comment section. I put the cover next video with some new set of questions. So then, have a nice day.